कर लिया। कहाँ अ, कहाँ पे है अभी? अच्छा, okay, I'll ask you this in the interview. Your life, sir. Okay, so hi, evening friends, evening everybody, which I guess we know each other pretty well. I'm Dr. Sushant Soni, MBBS MAMC, MD Pathology, Resident Hemato-Oncology, AIMS Delhi. And with us is absolutely our champ for the evening, that is Kabir Jaiswal, rank 245. And it's not about the rank, it's about the fact that he cleared it in the first attempt along with his internship. I mean, heartiest congratulations, Kabir, सबसे पहले. And थैंक यू। मुझे frankly speaking बहुत अच्छा लगता है whenever I take a first attempt interview. This is because majority of the times, especially in the dental segment, students have the thought process कि पहली बार में तो निकलेगा ही नहीं, कि सीट्स बहुत कम है, गवर्नमेंट सीट्स और कम है, क्लिनिकल ये वो whatever. So tell me your strategy. What different did you do? So, actually, I joined dental not with the intention of doing, knowing if I'll do dental or not. But Okay. going in first year, result तक I realized कि MDS is a must, मतलब करना ही पड़ेगा. So from then on, I started my efforts, got the standard MCQ books and everything. So second year से I did start my prep, and if not completely कि सारे subjects पूरे MDS level के पढ़ रहा हूँ, but still कोर्स के साथ साथ MCQs and all solve कर रहा था मैं. And देन थर्ड ईयर पे कोविड टाइम आया, एंड तब काफी कॉलेजेस बंद हो गए थे, छुट्टी हो गई थी. तो उसको मैंने यूटिलाइज करके मेरे मेडिकल सब्जेक्ट से उन पे काफी एम्फेसिस देके अच्छे से स्टडी कर लिया था, फार्मा फार्मा के स्पेशली. एंड पैथ्स पैथ्स माइक्रो भी, दो माइक्रो बायोकेम मेरे को इतना याद नहीं है, नहीं थे एंड तक. बट स्टिल मैंने मेडिकल सब्जेक्ट्स कोविड टाइम में काफी कवर किए थे, एंड पल्स वगैरह मैंने तब लगाई थी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होता है. फाइनल ईयर में मेरे को कोप करने के साथ कॉलेज एंड प्रेप के साथ कोप करने में टाइम इतना नहीं मिल रहा था, तो मेरा 2 साल का कोर्स था. तो मैंने लिया तो इसी इंटेंशन से था, बट आई कुड ओनली कंप्लीट 3 to 4 सब्जेक्ट्स, नॉट Oh, इवन 4. बट देन फाइनल ईयर के एग्जाम्स हुए, आई टुक 3 to 4 days टू रिलैक्स बाय माई सेल्फ, एंड दैट इज ऑल आई टुक. उसके बाद विथ इंटर्नशिप आई डिड माई प्रेप. आई यूज टू गो टू कॉलेज, आई यूज टू डू पेशेंट्स, and I tore up my book subject wise, and I used to solve it then and there in the OPD whenever I got free time. So that is how I did. so, Matlab, so Kabir, what I am getting from these few statements is that you are very focused. That too from the beginning itself. मतलब yes. तुम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से तुम्हारा टारगेट सर्टन था कि चलो ठीक है, बीडीएस तो मेरी हो ही गई है, एमडीएस का मेन टारगेट है. हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आई डिड इन द टॉप 10, बट मतलब कॉलेज वाइज मेरे बैच में आई डिड इन द टॉप 10, बट आई नेवर थॉट कि यार मेरी वन नहीं आई यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब बिकॉज दैट वाज नेवर माय एंड गोल. मैं ये तो सोचता ही नहीं था. So beautifully said, and this is for all your juniors who will be watching your interview. It absolutely does not matter what your college rank is. Solving Absolutely right. MCQs is a different ball game altogether. It needs All true. different kind of mindset, preparation, more focused approach, more nitty gritties as compared to college. So कबीर एक सबसे पहले मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताओ. I guess you are from MP. Yes, sir. I'm from MP, College of Dental Science and Hospital, Rao, Indore. Uh, Okay. my college is a private college, but it is Okay. one of the good colleges in MP. So I'll slightly interrupt you there. मतलब एक ना बहुत I'm when I talk or when I take an interview, I always talk not with respect to the toppers, but people like me. कि चलो ठीक है, हम लोगों की कभी डिस्टिंक्शन नहीं आई, कभी कुछ नहीं, लेकिन एमसीक्यूज करके हमने निकाला. एंड कभी दिस इज हाँ, हाईली मोटिवेटिंग कि तुमने एक प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, माइट बी द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज वट एवर, लेकिन एक ना, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज का बीडीएस स्टूडेंट है, उसको हमेशा एक ये फील रहता है कि हमारी रैंक आएगी. प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट में थोड़ा सा रहता है दोस्त, देखो तुम चाहे मानो या ना मानो, वर यू एवर अनसर्टन अबाउट द फैक्ट कि मेरा निकलेगा कि नहीं, या मैं कैसे compete कर पाऊंगा? हाँ, okay, मतलब that is always there, but then again, मतलब my college, I got very good exposure. मतलब I could publish 2 researches in internship Okay. with the blessings of my faculties. Okay. Also, my college does not have PG in many clinical branches, so I got to do much more stuff
compared to other colleges. Matlab, I got to do disimpactions, IMF biopsies and all. Okay. I have primarily interest in OS, so that was more of a push than anything. कि हाँ यही तो करना है मेरे को लाइफ में. कबीर, ये तुम्हारा माइंडसेट है दोस्त, तुम समझो. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द जूनियर्स स्पेशली इज कि ही इन अ नॉट दैट गुड अ सिचुएशन ही टुक आउट द पॉजिटिव पार्ट कि यार पीजी नहीं है, मतलब क्लिनिकल्स हाँ नहीं है, तो मैं वो काम करूंगा जो पीजी करते हैं. इस सब. हाँ, और अगर एक दूसरा, अगर एक थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट का बंदा होगा तो वो सोचेगा यार पीजी भी नहीं है मेरे कॉलेज में, मैं प्राइवेट से भी हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा ना, सो लेट मी टेक अ ड्रॉप एंड देन वी विल सी. सो इट इज द माइंडसेट दैट एक्चुअली डिसाइड्स हाउ सक्सेसफुल यू आर गोइंग टू बी इन, नॉट ओनली इन दिस पेपर आई गेस, इन लाइफ ऑल्सो. सो ओरल सर्जरी उठाना चाहता है. हाँ सर, अब लेट्स सी काउंसलिंग में कैसा क्या रहता है. Ah, बट but needless to say, bestest of luck from my side for all the future endeavors. अच्छा, lastly, अगर juniors के लिए कुछ few tips, did you feel like giving up? See, you are the meritorious one. I mean, no doubt, you शुरू से focus था. Something for the students who are not as focused as you are, probably are in third year, final year, अभी तक ज़्यादा MCQ books नहीं की हैं, उनके लिए advice. so I did think about it, but I was having one of my very low moments जब मैं सोच रहा था कि maybe I should not even go think about doing MDS, do a mass practice kind of thing after BDS. But that then in that moment I got call from one of my patients to thank me. So in that moment I realized कि नहीं, this is something that I have to do. That was also a push for me, a big push for me. So I it is mean, the zeal for excellence that yes, motivates you to yes, do this. and just bringing happiness to my patients. I mean, I did not think I would get this much attached to the industry, but then again, I did get this much Yeah, attached to it. Kabir, frankly speaking, you are one of the most positive-minded individuals that I have met, I have interviewed. I mean, it's actually a pleasure taking your interview, no doubt. अच्छा, Thank अब you so much, मुझे sir. लास्टली मुझे ये बताओ, इंटर्नशिप के साथ सपोज यू आर Hmm. गेटिंग फ्री एट 4 o'clock 5 o'clock, तो उसके बाद कैसे पढ़ाई करना है, मतलब So, क्या करना है? so first off, internship के अंदर I used to come in early and half one and a half an hour मिल जाता था जब तक faculties आते हैं, actual OPD चालू होती है. तो my batchmates were also very cooperative. They didn't used to disturb me. मतलब ठीक है lecture देख रहे हैं कर रहे हैं. They were very cooperative. I could not have done it without them. And फिर जब थोड़ा 3 बजे 3:30 अराउंड थोड़ा faculties भी समझते हैं तो early off दे देते हैं, maybe 15 minutes 20 minutes, but still time चुरा चुरा के. And I used to come home. I मतलब uh, there were some days I could not study, but whenever मतलब I used to make a habit कि 3-4 hours तो मेरे को पढ़ना ही है. If lectures देखना है MCQ solve करना है, but 3-4 hours अगर मैं मतलब consistency was all I had, because ऐसा तो है नहीं मैं घंटे घंटे बैठ पा रहा था. तो Oh. consistency ही मैंने पकड़ के रखी थी starting से, and that helped I guess. तो कंसिस्टेंसी, जोश की निकालना है. बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जो भी टाइम निकल पाए उस टाइम में फोकस तरीके से पढ़ना है. हाँ. एंड लास्टली टेल अस अबाउट योर टेस्ट, दैट इज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, कब से देने शुरू किए? Subject, I was done with my syllabus December around. I mean, ओके. I started final year from final year itself, so I think उससे मेरे को काफी हेल्प हुआ कि मेरा syllabus और notes मेरे at least उस टाइम पे पहले रेडी हो गए. उसके बाद I studied from my notes and did the standard books repeatedly. मतलब 3 times I solved the pulse, रिवीजन. हम्म. and that is मतलब after December I solved it 3 times, and जो मेरे पहले मैंने किए थे वो तो क्या ही था. उसका सिनॉप्सिस भी आई स्टडीड. एंड उसके बाद जनवरी तक मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आया फेब से आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, बट आई देन आई गिव मॉक्स एवरी अदर डे. और मतलब ऑल इन ऑल बिफोर गोइंग टू एग्जाम आई हैड गिवन 10 to 12 मॉक्स. So, I mean, for all the interns who are doing, who have just entered, this is like April going on. Kabir, do you think it is too late for them to start, or will they be able to crack it at this time if they start rigorously at present? देखो तो दोस्त, डेंटल सब्जेक्ट तो सबको आते हैं, इशू हाँ, आता है आई गेस मेडिकल सब्जेक्ट्स में.
सर डेंटल सब्जेक्ट्स में भी आई फेल्ट इस बार के पेपर में देयर वर मेनी यू नो घुमाने वाले क्वेश्चंस आई फेल्ट की काफी थे. I mean, they ओके did try to trick us. But ओके हाँ डेंटल, आई डोंट थिंक ऐसा सोचना चाहिए कि डेंटल तो मेरे को आता है, बिकॉज ओके उसके अंदर ही कई बार वो गेम कर जाते हैं क्वेश्चंस में. तो अगर डेंटल में शिट हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते आई गेस. हाँ, बिकॉज मेडिकल इस बार आई फेल्ट की काफी इजी था ओके. कंपेरेटिवली. तो सी डेंटल हाँ ठीक है आता है, पर देन अगेन उसका नेट एंड ग्रेड पता होना चाहिए. ऐसे नहीं कि ठीक है रिमूवेबल अप्लायंस एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर का भी पता होना चाहिए, इंडिकेशंस वगैरह एंड ऑल डिटेल में. सो वो है इफ एंड अप्रैल. इफ अ स्टूडेंट स्टार्ट्स इन अप्रैल, मिड अप्रैल, हाँ कर पाएगा? देखो सब. कोई बटर नहीं लगाना. वी हैव हैड अ वेरी फ्रैंक टॉक कबीर. तुम समझो ऑल इंटरव्यूज आई टेक, आई मीन नॉर्मली इंस्टीट्यूट सेज कि सर आपने रिकॉर्ड ही किया करो, लाइव पे पता नहीं क्या बोल देते हो. तो कुछ बटर नहीं, कुछ नहीं, सीधी बात. निकल पाएगा इस टाइम? सर अगर आपने अप्रैल से चालू किया एंड अप्रैल से ही चालू किया आपने, बाकी फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर कुछ नहीं पढ़ा है, तो आई मीन इफ यू आर लकी वाली बात हो जाती है. पर अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, एम्फेसिस देके एंड आपके बेसिक्स क्लियर है, तो इट्स वेरी इजी. मतलब इट्स नॉट दैट क्रेजी हार्ड, इट इज हार्ड बट इट्स नॉट क्रेजी हार्ड की मतलब सोच के आप मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि यार ट्रिपल डिजिट रैंक तो पता नहीं कितनी आती होगी, बट इट्स नॉट दैट क्रेजी हार्ड. इट इज हार्ड बट नॉट क्रेजी हार्ड. The last interview I took na Kabir, a very pretty girl, she also said the same thing कि हम लोग सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट इज नीडेड. हम लोग एक्चुअली ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे वो टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते, बट दे आर एक्चुअली फ्रॉम अमंग अस. सो इफ वी कीप ऑन स्टडिंग विद कंसिस्टेंसी, आई गेस सक्सेस हाँ शैल बी yours. Last parting words. You can say thanks to anybody you wish, parents, faculties, जो भी तुम्हारे मन में. Last parting words. obviously thanks to my parents and my faculties, especially the clinical ones. They have motivated me at times when I felt very low, and my friends, I could not have done without them. They Beautiful. were a big support system, and thanks to the coaching itself. I mean, you only told us the topics and everything. So it's we are part of this journey together, दोस्त. Take care. And I know तुम्हारी पार्टी अभी तक थोड़ी सी पेंडिंग है. Do that. Do. Take care, Okay. दोस्त. Take Thank you care. so much, sir. Yeah. Bye. Take care.